Hello, how are you? Welcome to the second part of Introduction to AutoCAD and their basic commands. So basically in last class we have completed the four command, that is nothing but how to start with the screen fit. So for that we have for a screen fit we talked about the first command, that is nothing but Z enter A enter. So here Z stands for zoom and A stands for all, that is basically used for the screen fit. Then the next command we were talking about the unit system. तो unit system के लिए हमने क्या लिखा था, unit and shortcut क्या था, UN, right? The unit system में basically we need to change the dimension into mm, right? Then we have talked about the type of dimensioning system, that is nothing but the dimensioning style. So for that we have the command dim style. Okay, for that the shortcut was D. इसके बाद हमने बात की थी layers. So basically we were using three types of layer, that is nothing but H, 2H and 3H. Okay, so the same thing I'm going to show you once again in AutoCAD in a very quick manner. Okay, so this is the AutoCAD. So first of all what we need to do, we need to introduce a new page, then we need to press Z, enter, A, enter. तो ये क्या होगा, आपको कैसे पता चलेगा स्क्रीन फिट हो गया, आपको एक ग्रीन कलर की लाइन अपीयर होगी. फिर you need to type unit system. So for that the shortcut is UN. Just type it UN and what we need to do, हमें precision को 0 करना था and we need to change the unit system to millimeter, right? And then we need to press OK. Once we have done with the unit system, then we need to press the escape button. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप एक कमांड से दूसरे कमांड में स्विच करेंगे, in between you need to press the escape button, ESC. So basically that is used to cancel. जब आप escape करेंगे तो कमांड लाइन में you can see here cancel is appearing. Okay, अब हमारा next जो है, अब now we need to change the dimensioning style. So simply press D, enter, then we'll go for the modify में हम कहाँ जाएंगे, lines में, line में we need to change the color. So I'll change the color to red color. Here the extension line will be red color. Symbol and arrow में just change this arrowhead as 1:3. Then we'll go for the text style में text height हमने रखी थी 4.5. I'll change it to 4.5 and then we need to click on ISO standard. फिर fit में हम कोई चीज नहीं करते, primary units में just change the precision to 0 and then you need to press OK and then अप्लाई करने के लिए हमें सेट करेंट पे क्लिक करना. देन विल गो फॉर द लेयर्स. तो लेयर के लिए लेयर टाइप करेंगे, एंटर करेंगे. तो नाउ वी नीड टू इंट्रोड्यूस द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंसिल्स. तो मैंने आपको बताया था हियर वी कैन इंट्रोड्यूस अ न्यू लेयर. तो आप इसके लिए शॉर्टकट अल्ट प्लस एन कर सकते हैं या फिर हमने न्यू लेयर लिया, आई टाइप एच पेंसिल एंड वी नीड टू चेंज द लाइन वेट. तो लाइन वेट मैंने आपको बताया था कि वी नीड टू कीप इट एज 0.30. फिर 2H पेंसिल ले लेते हैं, लेट्स से 2H. यहाँ पे हम इसका लाइन वेट चेंज करेंगे, लाइन वेट विल चेंज इट टू 0.15. ये भी हमने लास्ट वीडियो में रेफर किया था. देन विल गो फॉर द 3H, right? And for the detail you can go here. I'll put the same in the I'll also put the link जिससे आप क्या करेंगे, प्रीवियस विंडो को आप जा सकते हैं. नाउ वी हैव इंट्रोड्यूस H, 2H and 3H पेंसिल. इसके बाद नाउ द नेक्स्ट कमांड व्हाट वी आर गोइंग टू स्विच. सो द नेक्स्ट कमांड फॉर टुडे is DS. So DS stands for drafting setting. बेसिकली ड्राफ्टिंग सेटिंग क्यों यूज करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास दो लाइन है एंड नाउ दीज टू लाइंस इज हैविंग सम डायमेंशन. मान लीजिए लेट्स से कि हमने इसका डायमेंशन कर दिया, लेट्स से दिस इज 20 एंड दिस इज आल्सो 20 और लेट्स से 30, राइट? नाउ सिंस दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो इसमें हम पैरेललिज्म कंडीशन भी रख सकते हैं. तो बेसिकली हमारे पास दो चीजें, एक तो हम न्यूमेरिक के फॉर्म में दे सकते हैं डायमेंशंस और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स दे सकते हैं. कैसे दे सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा, जस्ट we'll switch to the AutoCAD. Let's say I'm taking a line, I'm drawing, just simply drawing a line, right? और फिर इसको एग्जिट करने के लिए आप क्या करेंगे, escape बटन प्रेस करेंगे तो यू विल एग्जिट फ्रॉम द लाइन कमांड. देन जस्ट सिंपली टाइप DS. सो DS स्टैंड्स फॉर ड्राफ्टिंग सेटिंग. तो डी सेटिंग, जस्ट एंटर, राइट? और यहाँ पर हमें सिंपली सीधा जाना है ऑब्जेक्ट स्नैप पे. तो ऑब्जेक्ट स्नैप पे देख सकते हैं ये सारी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट है, जैसे परपेंडिकुलर, टेंजेंट, नियरेस्ट, नोड, राइट? अगर मान लीजिए मैंने सबको क्लियर कर दिया एंड देन आई हैव प्रेस्ड ओके, तो इफ सपोज आई वांट टू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम दिस एंड पॉइंट, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम कितना भी जूम करेंगे तब भी हम उस एंड पॉइंट को सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, राइट? सो देयर विल बी सम टेक्निकल एरर.
So how to remove, suppose I want to select the midpoint of this line. I don't know the length of this line, but still I want to select the midpoint of this line. So what I need to do, just simply type ds, that is nothing but drafting setting, go for the object snap. हमें कहाँ जाना है, object snap पे जाना है. Select कीजिए सारे window को and then press OK. Now if we'll take a line, तो देखिए easily you can get the endpoint. Easily this endpoint is getting selected, right? Suppose I want to सेलेक्ट द मिड पॉइंट, तो आप क्या करेंगे, इस लाइन पे जब मूव करेंगे तो एक ट्रायंगल की तरह सिंबल अपीयर होगा, यू कैन सी. सो दिस रिप्रेजेंट्स द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन. आई होप इट इज क्लियर फॉर एवरीवन कि ड्राफ्टिंग सेटिंग किस लिए यूज करते हैं, टू एनेबल दी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स. डायमेंशनल कंस्ट्रेंट तो डायमेंशंस तो हम यहाँ से दे सकते हैं लाइन का. सो वी हैव लीनियर, अलाइंड, एंगुलर, सो दैट आई विल गो थ्रू, डोंट वरी. ओके, हमने अभी बेसिकली बात करी थी हम लोग ड्राफ्टिंग सेटिंग की, तो आई होप इट इज क्लियर. तो अब हम क्या करते हैं, डीएस जाएंगे, ड्राफ्टिंग सेटिंग, ऑब्जेक्ट स्नैप पे वी नीड टू एक्टिवेट all these. तो इसको select all करेंगे and then you need to press OK. This is for the geometrical constraint. Okay, then we'll go, then again we'll go back uh, to the PPT, and now the next command is text height. तो बेसिकली टेक्स्ट हाइट क्या है कि अगर मान लीजिए कि हमें सपोज वी वांट टू डू दी नेमिंग ऑफ दिस वन, तो हमें हमारे पास ये नहीं पता, तो ऑटो कैड में बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट का साइज होता है वो 0 होता है. कैसे चेक करेंगे, तो आप सिंपली एनोड पे क्लिक करेंगे, होम से आप इंसर्ट एनोड टैब पे जाएंगे, एनोड टैब में टेक्स्ट आपको दिख रहा है, इसके बगल में देयर इज अ diagonal arrow that is for the text style, just simply click on that. तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो you will get a pop-up window over there. So here we have the font name, so I'll change it to Times New Roman. You can keep it in any of the thing, right? Font style regular hai. If you want, you can change bold, italic, right? Suppose I want to keep it normal. You can see the text height is by default it is 0. तो बेसिकली टेक्स्ट हाइट क्या हो रहा है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0 रहेगा. अगर मान लीजिए मैं ऑटोकैड में कुछ लिख भी रहा हूँ ABCD, तो ऑब्वियसली जब हम उसको प्रिंट करेंगे तो वो visible nahi rahega, because the text height is by default it is 0. And then again you need to press apply and then close this one. Now how to write the name, again we'll go back to the home tab. Now we have A, just select this one and create a box. So now it's asking what is the name, let's say A. Suppose I want multiple name, अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर suppose we want A, B, C, so these all are different words, right? So again and again we need to take this text box, then we should write B, then we can, suppose we need to write A dash, so I'll write A dash, then we can write B dash, everything we can do. Okay, so that is the next command. So text height के लिए क्या करते हैं, we have to go for the anode. Anode में text लिखा हुआ है, इसके बगल में diagonal arrow, just click on that and you can change the text height. Okay, now we'll go back to the PPT and now we'll see the next command, that is nothing but the copy, paste, move, pan. All these commands we are going to see. Okay, तो कैसे करते हैं हम लोग, वापस आएंगे ऑटोकैड में. नाउ सपोज आई वांट टू मूव दिस ए टू दिस पॉइंट. अब मैं चाहता हूं ए जो है हमारा वो मूव होकर के इस लाइन के एंड पॉइंट में आ जाए. तो सिंपली वन क्लिक ऑन दैट, तो हमें इसको सिंगल क्लिक से सेलेक्ट करना है. नाउ वी हैव ए ऑप्शन ऑफ move, right? Or right, so simply select on move. Right now it's asking about which point, तो आप इसी को वापस रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं. नाउ यू कैन मूव इन any of the way. Suppose I want to move it here, so you can just simply move A, right? Similarly B कैसे move करेंगे, then again B, select the B point, then again we'll click on the move button and then again you need to specify the base point. तो base point हम उसी point पे specify कर देते हैं. अब now I can move the B. Suppose I want to move it here, I can move it here. Suppose I want to move A dash, so select this one, again click on move and then you can click on the reference point and you can move this A dash. Suppose I want this A, I want to copy this one. तो अगेन कॉपी करने का भी क्या तरीका होता है, सेलेक्ट दिस वन, जैसे हम मूव कर रहे थे उसी तरह यहाँ पे. नाउ जस्ट बिलो द मूव वी हैव ए कॉपी कमांड, राइट? जस्ट क्लिक ऑन द कॉपी. नाउ अगेन इट विल आस्क द बेस पॉइंट. जब भी आप मूव करेंगे, कॉपी करेंगे, तो अगेन एंड अगेन दे विल आस्क द रेफरेंस पॉइंट. तो फिर से आप इसको रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं. नाउ जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतनी बार ये पेस्ट होता जाएगा. सो दिस इज द वे हाउ यू कैन डू दी कॉपी एंड पेस्ट. तो कैसे करते हैं, जस्ट सिंपली सेलेक्ट दिस वन, click on the copy button, right?
स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, तो बेस पॉइंट हम क्या करेंगे, उसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे एंड नाउ यू कैन क्लिक मल्टीपल टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स यू वांट, राइट। तो जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतनी बार वो ए पेस्ट होता जाएगा। ओके, नाउ now what we'll do, so now we have covered most of the command, and these commands are only are useful in all the for all the engineering graphics, all the engineering graphics syllabus. For example, projection of point, line and plane, right? तो ये जितने commands मैंने आपको बताए हैं, these are the master command which will be useful. Okay, इसके अलावा बहुत सारे commands हैं जो use होते हैं, but these are the main 7 commands that will be useful in all for all the seat. Okay, तो जब भी आप कोई भी ड्राइंग करेंगे, चाहे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट बनाए या प्लेन बनाए या लाइन बनाए या सॉलिड बनाए, तो अगेन एंड अगेन यू नीड टू डू दी सेटिंग, राइट। तो कैसे करेंगे, सपोज किसी एक असाइनमेंट में सपोज वी हैव 5 क्वेश्चंस, तो हाउ विल डू दैट वन, तो हम कैसे करेंगे, तो सिंपली आई विल डिलीट दिस वन। तो इसमें सिलेक्शन जो है, आप आप प्रेस करके इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब कहने का मतलब है, इट्स नॉट लाइक यू विल सेलेक्ट द कंट्रोल ए, सिंपली आप क्या करेंगे, एक सिंगल क्लिक करेंगे एंड यू कैन ड्रैग दिस वन, तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। जस्ट सिंपली डिलीट दिस वन। हमने ऑलरेडी सेटिंग्स की हुई है, तो नाउ आई विल टेक एक सिंपल क्वेश्चन, मान लीजिए आई विल टेक a simple question on projection of point, right? So let's say I have a question कि a point is 20 mm above HP and 30 mm in front of PP। इसका डिटेल कि कैसे इसको सॉल्व करना है, वो सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ऐसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से आई विल टेक a 2D 2 dimension coordinate system. Now the point is 20 mm above HP. 20 mm above HP मतलब either it will lie in the first quadrant or in the second quadrant, and 30 mm in front of VP. So obviously the point will lie in the first quadrant. This is the vertical plane. This is your horizontal plane, and this is the point A, which is 20 mm above HP. So this is 20 mm and this is 30 mm. तो ऑब्वियसली बात है, इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन फॉर द फ्रंट व्यू विल बी हियर। तो फ्रंट व्यू के कारण क्या होगा कि आपका फ्रंट व्यू विल अपीयर समवेयर हियर, राइट। सो दिस इज द पॉइंट, लेट्स से ए डैश, फ्रंट व्यू को हम विथ डैश इंडिकेट करते हैं। सो दिस विल बी 20 एंड इफ आई विल सी फ्रॉम द टॉप, so the point will appear somewhere here and this distance will be 30, and as per the rule we need to rotate the plane 90 degree in clockwise direction, so the point will come somewhere here. So if I'll draw the view, so obviously the point will appear somewhere here, so this point is a dash and this point is obviously a, because the top view हम without prime लिखते हैं, right? So now obviously these are the true entity, right? Then we'll join this with 3H pencil, right? So this distance is how much? So this is given as 20. So I'll write here 20. Let's say this is 20 and this distance is 30. Now how to draw the same thing in AutoCAD? So this is your X and this is your Y. So obviously हम इसको जब भी draw करेंगे, we need to take the print out. So we'll always take the A4 sheet, right? The A4 sheet में with this we need to draw. So the size of A4 sheet, if you know, that is 295 or 97 into 210 mm, right? So now again we'll go back to the AutoCAD and we have already done all the first 7 settings, right? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, now we'll take the rectangle, right? Rectangle लेकर के left hand side bottom corner पे एक single click करेंगे and then try to drag this one. Now since it's asking the dimension, और ये blue color से जो line highlight हो रही है, जो number highlight हो रहा है, that represents the width, right? So let's say this is 297. Now if I want to switch to 179, तो simply press करेंगे हम tab. जैसे ही tab press करेंगे तो 297 आपका लॉक हो चुका है. Now we'll give 210. Suppose again I want to go for the 297, तो आप tab press करेंगे, again you will go back, right? और मैंने आपको starting में ही बताया है कि AutoCAD जो है एक नॉन पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर है, तो वंस विल एग्जिट फ्रॉम दिस कमांड तो विल नॉट बी एबल टू मॉडिफाई दिस रेक्टेंगल। ओके, तो हमने इसका डायमेंशन कर दिया A4 साइज का 297 by 210 and thus press enter. So now we have created this box. Okay, now suppose I want to what we need to do, we need to take the H pencil for creating the XY line. तो मैंने यहाँ पर से क्या किया, लेयर से जाकर के H pencil लिया और फिर यहाँ से लाइन ली, and now I'll draw a
लाइन, राइट। तो सपोज आपको अगर सिर्फ 90 डिग्रीज में लाइन चाहिए तो एक कमांड होता है, नाउ दिस कमांड इज वेरी मच यूजफुल। सो द नेक्स्ट कमांड इज ऑर्थो मोड ऑन। सो ऑन एंड ऑफ, तो ऑन और ऑफ कैसे करते हैं हम, कंट्रोल प्लस एल, एंड ऑफ करने के लिए भी कंट्रोल प्लस एल करते हैं, ठीक है। तो नाउ लुक एट हियर, नाउ सपोज आई वांट टू ड्रॉ द लाइन, तो अभी लाइन किसी भी एंगल में मूव कर रहा है, सपोज आई विल प्रेस कंट्रोल एल, तो ये कैन सी विल ओनली बी एबल टू ड्रॉ द लाइन इन हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायरेक्शन, क्योंकि हम सिर्फ 90 डिग्री में लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज वी हैव डन विद द एक्स वाई लाइन, ओके, दिस इज विद एच पेंसिल। फिर मान लीजिए मुझे 2H पेंसिल चाहिए, तो मैं 2H पेंसिल लूंगा। नाउ आई नीड टू राइट द नेम, सो लेट्स से द नेम इज एक्स एंड देन वाई, okay. Then how to move this one, just simply select this one, click on the move command, इसको सेम पॉइंट का स्पेसिफाई करेंगे। सिंस अभी ऑर्थो ऑन है तो यू कैन ओनली मूव इन 90 डिग्री, राइट। तो इसको ऑफ कैसे करेंगे, फिर से हमें ऑर्थो ऑफ करना पड़ेगा, तो हम कंट्रोल एल प्रेस करेंगे। नाउ द ऑर्थो इज ऑफ, नाउ आई विल प्लेस एक्स हियर, सिमिलरली आई विल सेलेक्ट वाई and then I'll click on move command, select this one and then I'll move this one here, right? Now हमारा XY move कर गया। Now the question was, the point is 30 mm, 20 mm above HP, तो I'll take a line, तो obvious सी बात है कि हम प्रोजेक्टर लाइन ले रहे हैं तो 3H पेंसिल से लेंगे, तो I'll take a line, let's say from any point I'll go 20 mm above HP, तो again I need to on the ortho क्योंकि हमें 90 डिग्री में बनानी है line, I'll press Ctrl L and the height is 20, so simply type 20 and 90 degree is already locked because हमने ortho mode on रखा है, so 20 mm above HP, so this is done, हमने 20 mm बना लिया। Now how to exit this one, just simply press escape button, right? Then again we'll take a line and again from this XY line we'll go 30 mm below, so I'll go 30 mm below। Now again, now it's done, हमने ये लाइन बना ली। Now the naming will be, now we should write the name, so I'll write the name, let's say the front view we are denoting with prime, so I'll write A prime and then here I'll write A, right? Now how to move this one, select this one, फिर move पे click करेंगे, select this one, again ortho is on, तो off कर लेंगे क्योंकि किसी भी एंगल में मूव करना है तो हमें ortho हमेशा ऑफ करना पड़ता है। तो let's say this is A dash and now this select this one, again move button, select this A। आप चाहे तो डायरेक्टली भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, राइट, कि आपने यहाँ से टेक्स्ट लिया और आपको जहां टाइप करना है वहीं पे ये टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू डू द डायमेंशनिंग। तो डायमेंशनिंग करने के लिए हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन के डायमेंशन के लिए हम लोग लीनियर यूज करते हैं, इंक्लाइन लाइन के लिए हम अलाइन करते हैं। तो कैसे करना है, आपको होम टैब में जाना है, लीन डायमेंशनिंग कहाँ मिलता है आपको, यहाँ पे यू कैन सी हियर, दिस इज द डायमेंशनिंग एनोटेशन टूल बार, एनोटेशन टूल बार में यू विल गेट ए लीनियर, सो सेलेक्ट दिस पॉइंट एंड सेलेक्ट द रेफरेंस लाइन यहाँ पर से, सो यू कैन सी वी आर डूइंग द डायमेंशन अलाइन इन अलाइन सिस्टम, ठीक है। फिर से इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, नाउ यू कैन सी we have done with the dimension। अभी हमारा ड्राइंग कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट। क्यों नहीं कंप्लीट हुआ है, बिकॉज हमने अभी तक पॉइंट्स यहाँ पे क्रिएट नहीं किए हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट कमांड है फॉर क्रिएटिंग द पॉइंट दैट इज नोन एज डोनट। हम क्या करते हैं, पॉइंट क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डोनट्स, राइट। तो डोनट क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, सिंपली click, just write donut, press enter, and then it will ask, so donut will be look like this, internal radius and outer radius, so it's like a torus, right? So internal dia we need to give 0.1 mm internal dia and outer dia we can give 2 mm, okay, so this is the standard size, okay. So again I'll go back to here, now I'll simply type donut, press enter. Now internal dia 0.1 mm and outer dia 2 mm. Press enter. Now it's asking the point. तो आपको simply जहां पर भी point चाहिए उन points पे आपको click कर देना है. Now escape button. So you can see, right? We can see the projection of point is over. We have done with the solution. मान लीजिए हमने इसको बहुत zoom कर दिया, तो हम इसको screen fit कैसे करेंगे? Z enter A enter. तो अगेन ये स्क्रीन फिट हो जाएगा। आपने इसको बहुत ज्यादा जूम आउट कर दिया, राइट। अगेन इफ यू वांट टू फिट द स्क्रीन, सो सिंपली टाइप Z enter enter, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको स्क्रीन फिट पे रखा हुआ है। नाउ द लास्ट स्टेप इज हाउ टू टेक द PDF फाइल ऑफ दिस वन।
तो कैसे करेंगे? जस्ट सिंपली प्रेस कंट्रोल पी प्रेस करना है फॉर द प्रिंट आउट। प्रिंट आउट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है? जस्ट सेलेक्ट दी प्रिंटर। तो प्रिंटर में आपको क्या करना है? ड्रॉइंग टू पीडीएफ फाइल, हम ड्रॉइंग बना रहे हैं उसको हम पीडीएफ में करना चाहते हैं, तो आई हैव सेव ड्रॉइंग टू पीडीएफ and the size we have taken as 297, so ISO A4 we have taken 297 by 210 mm, तो हमने वो सेलेक्ट कर लिया। फिर हमने इसको फिट टू पेपर करना है और फिर सिंपली यहाँ पे ओरिएंटेशन को हम लैंडस्केप पे कर देंगे। ओके, और यहाँ पे अब व्हाट टू प्लॉट हमने क्या क्या चेंज किया? आईएसओ A4 में 297 टू 210 किया, राइट। देन फिट टू पेपर अगर नहीं क्लिक है तो यू जस्ट क्लिक ऑन दैट वन, और यहाँ पे ड्राइंग ओरिएंटेशन में क्लिक ऑन दी लैंडस्केप। एंड देन व्हाट टू प्लॉट में वो जो हम प्लॉट कर जो स्क्रीन पे बना है दैट वी वांट टू प्लॉट, तो विल क्लिक ऑन दिस वन एंड सेलेक्ट दी विंडो। विंडो सेलेक्ट करने के बाद इस लाइन का ये जो रेक्टेंगल बना है उसका बॉटम कॉर्नर और टॉप कॉर्नर सेलेक्ट करेंगे और प्रेस ओके कर देंगे, एंड देन यू कैन सेव इन द डेस्कटॉप फाइल। So you can see we'll be able to get the final dimension. I hope you'll be able to understand. In the next video, we'll start with the orthographic projection. Then we'll take the questions on projection of point, projection of line, and projection of plane. And parallelly, we'll try to solve all the questions in AutoCAD. Okay. And if you have any kind of comment, please write in the comment bar, right? And do share and subscribe. Thank you. Thank you, everyone.